जो थीम है वो अतिथि देवो भव के पर निर्भर है। दे कनेक्ट, these migratory species connect the world and together we would welcome them। पृथ्वी उनका घर है और किसी भी देश में जाए उनका स्वागत है। एक सभी सृष्टि को हम बता रहे और ये मूल भारतीय मूल्य है कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्राणी, जलचर सभी हमारे हिस्सा है प्रकृति का। हम जैसे प्रकृति का हिस्सा है वैसे वो भी है और इसलिए एक दूसरे का जीवन एक दूसरे पर निर्भर है, ये मुद्दा है। आपको याद होगा 6 महीने पहले ये दूसरा कॉप है जो भारत ने मेजबानी की है। पहले जो जमीन खराब होती है, लैंड डिग्रेडेशन, तो कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, इसके बारे में एक यूएन का अधिवेशन हुआ था जिसमें 170 देश आए थे। उसका भी मेजबानी भारत ने की और आने वाले 2 साल के लिए ये कॉप 14 था, ये कॉप 13 है। तो कॉप 14 जो यूएनसीसीडी का था उसका भी भारत अध्यक्ष रहेगा और आने वाले 3 साल ये माइग्रेटरी स्पेसीज का भी अध्यक्ष भारत रहेगा। इसमें प्रदूषण से जो समस्याएं पैदा हुई है, जलवायु परिवर्तन से जो समस्याएं पैदा हुई है और विज्ञान ने जो नए तरीके खोजे हैं जिससे कि यह संवर्धन ठीक होता है, ये सब इसमें चर्चा होगी। आपको पता है भारत में वल्चर्स, गिद्ध, इस गिद्ध का डाइक्लोफिनैक पशुओं को दवा दी जाती थी। उसका मांस खाने के कारण 4 करोड़ जो गिद्ध थे वो 4 लाख भी नहीं बचे। तो उसका अब संवर्धन शुरू है और वो भी अच्छी तरीके से सफल रहा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे गोडावण कहते हैं, इस गोडावण की भी लगभग प्रजाति समाप्त होने पर थी, लेकिन उसका भी राजस्थान में संवर्धन हम कर रहे, जिसमें 11 नए बच्चे पैदा हुए हैं। अमूर फाल्कन, लाखों की तादाद में वो अमूर चाइना के एक विभाग से आते हैं और नागालैंड में एक ही जगह वो घर बसाते हैं और हर साल वहाँ से निकल के साउथ अफ्रीका जाते हैं, सोमालिया तक जाते हैं। तो ये पक्षियों का प्रवास बड़ा रोमांचक होता है। जैसे अपने हाईवेज है वैसे फ्लाईवेज है उनके, जैसे एयर का भी फ्लाईवे होता है वैसे ही इसका भी फ्लाईवे है। और फ्लाईवे में ये 9 फ्लाईवेज है दुनिया में, उसका एक एशियन फ्लाईवे हमारे यहाँ आता है। तो ये अमूर फाल्कन का भी बहुत सारी, उसको मारकर खा रहे थे लोग, लेकिन समाज में ही नई चेतना जगी और जिसको वो मारकर खाने की चीज़ समझते थे उसको मित्र माना, तो आज बहुत अच्छा संवर्धन वहाँ होता है। गंगा डॉल्फिन का भी पुनरुज्जीवन एक तरह से स्वच्छ भारत मिशन के कारण हुआ है। मुरारी बापू जी ने जिस तरह से सभी फिशरमैन कम्युनिटी को एक अपील किया और व्हेल शार्क जो है वो व्हेल शार्क को संरक्षण करने का उन्होंने कसम दिलाई, तो लोग जाल में फंसे व्हेल शार्क को छोड़ देते। ऐसी अनेक कहानियां हैं, उस सब की चर्चा वहाँ होगी। हर देश अपने अनुभव साझा करेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
भारत की इसमें रुचि है और प्रधानमंत्री जी की विशेष है। उन्होंने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव 2 साल पहले लॉन्च किया है। तो ये, और अभी इस कॉप में भी एशियन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में हम एक अगुवाई करके कुछ न कुछ अच्छा काम तय होगा। सो फ्रेंड्स, इंडिया इज होस्टिंग COP13, Convention of Migratory Species of Wildlife. This includes birds, animals, mammals, and aquatic. This will happen in Gandhinagar from 17th February to 22nd February. And first 2 days, 15th and 16th, will be pre-COP discussions amongst the ministers and officials and organizations. But this main COP will be attended by more than 1,800 experts, bird lovers, and those who have studied into this, and various intergovernmental organizations, international organizations, because this is held under UNEP, United Nations Environment Program. And more importantly, Prime Minister of India, Narendra Modi ji, will inaugurate this through video conference. Gujarat Chief Minister will be present there. We'll have 15 foreign ministers and 18 state ministers from various states. More than 130 countries will participate. And the theme of this is an Indian ethos like Atithi Devo Bhava. In English it is said, they connect the world and we together welcome them home. So that's the theme. The mascot of this is Gibi, the great Indian bustard. And this ethos, India always believes in nature as our part of life. So be it trees, be it animals, mammals, birds, and even fisheries. India is the only country which worships all of them. This COP is in succession, second COP in short duration. The first COP 14 of UNCCD, that was combating desertification. And 170 countries attended it, we hosted it. And now we are president for next 2 years for that COP on desertification. Now we'll host this migratory species, and this will give us presidency for next 3 years. The conference will discuss various aspects of challenges and opportunities of how to preserve the migratory species from the threats and opportunities to help them so their number grows. And India has already presented a good success story of this. Vultures which died because of diclofenac served to animals, and when carcass of buffaloes were eaten, consumed by vultures, 40 million vultures reduced to not even 400,000 vultures. But we are now again doing all our bit to improve the condition, and it is improving. The GIB also, there is great success story of GIB conservation. Amur falcon, which comes in millions in Nagaland from Amur of China, and then they fly to Somalia, South Africa from India. 160 hours of non-stop travel. So we have also established all that. And there are social movements also, like Murari Bapu has vowed
fishermen to protect whale shark. If they found it in their net, they'll leave them in the seas. Snow leopards, and there are many other things. Prime Minister Narendra Modi has also initiated Indo-Pacific Ocean Initiative, and this COP will also see India's emerging leadership in Central Asian flyways. So this COP is very important, and we welcome everybody in the COP, and I'm very sure that this COP will be very much successful. Yes, there will be 10 new species which will be added to, which you will get to know at the time. And more importantly, Bhutan and other states, other countries will also, Bangladesh also will be a regular full-time member. So our cooperation is as one unit, and we are, because birds or mammals or aquatic, they don't understand or they don't limit themselves to one boundary of one particular country. They go across. And therefore, this is exactly why the world has to come together to protect environment. As far as Sambar Lake is concerned, as you know, that this was out of one particular bacteria, an infection, which spread, but now that has been already treated, and there will be no problem from next year to migratory birds. इसमें 130 देश भाग लेंगे, और दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि ऐसी विलुप्त होने वाली प्रजातियों को संरक्षण देने के लिए ही ये कन्वेंशन बना, और ये कन्वेंशन के एक्शंस के कारण बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आया, सारे कंट्रीज़ ने अपने कार्यक्रम कमिट किए, और इसी के कारण ये आज फिर से पुनरुज्जीवन होता हुआ हमें दिखाई देता है, तो यही गति और बढ़ाएंगे. We want to promote bird watching everywhere because our whole lifestyle is pro nature. As we grow into cities, then it becomes problem and we get disconnected with the natural world. Otherwise, in villages, 600,000 villages have all living together, and they have a very symbiotic relationship with the world around, which in cities that becomes a problem. So we are creating new spots where they can watch birds, and they can promoting also ecotourism so that people go nearby and can watch and observe. Let us not create a fear psychosis. People are watching, experts are watching, and there is no connection of coronavirus with this species, and therefore this conference will also deal with various kinds of infection, new threats, new viruses, all that is the subject, and therefore from 17th to 22nd, this will be 6 days main conference and 2 days pre-COP. So that take care of. As far as conservation stories are concerned and efforts of various nations are concerned, this 6 days conference will present many countries' case studies, and therefore the world will also know what the latest efforts are by various countries. एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद जो प्राणी, पक्षी और जलचर जो प्रवासी होते हैं उनके बचाव के लिए, उनके संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए दुनिया का एक कार्यक्रम चलता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत, कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद होती है, ऐसी 13वीं परिषद 17 से 22 फरवरी तक अहमदाबाद में गांधीनगर में होगी, महात्मा गांधी मंदिर में, और इस परिषद में दुनिया के 130 देश शामिल होंगे. वहाँ के विशेषज्ञ, वहाँ के वैज्ञानिक, वहाँ की स्वयंसेवी संस्थाएं, वहाँ की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, और 1800 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी हो गया है. इस परिषद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करेंगे,
मुख्यमंत्री गुजरात के वहाँ रहेंगे, 18 राज्यों के मंत्री भी रहेंगे और विदेशों से भी 15 मंत्री इसके लिए आ रहे हैं। एक तरह से इसका जो मैस्कट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो जो हमारा गुंडवाना पक ये है वो उसका मैस्कट है। और भारतीय मूल संस्कृति जो है कि सृष्टि को व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि, ये एक लिंक है। उसी के तरह ये सृष्टि का एक हिस्सा है, उसका प्रोटेक्शन करना हमारा काम है। और ये भारत में होने वाला दूसरा कॉप है। लगातार एक निर्वनीकरण के बारे में हुआ और एक ये नया प्रवासी प्रजातियों के लिए हो रहा है। इसमें बहुत सारी चर्चाएं होगी और अनेक देशों के जो प्रभावी सफल प्रयास रहे हैं उससे एक दूसरा देश सीखते हैं और नए नीतियां भी तय होगी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिषद भारत में संपन्न हो रही है। इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल migratory species of wildlife including birds, mammals and aquatic. More than 130 countries are going to participate. Experts, scientists, researchers, intergovernmental organizations. So this is a very important COP happening in the country. Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.